India's road network. It has evolved from ensuring basic connectivity to the enabling macroeconomic integration, building integrated logistical network. What are the challenges in making economically efficient, environmentally sustainable, and socially inclusive roads? Road infrastructure today is overwhelmingly designed for motorized vehicles. Supreme Court has ruled that right to walk safely on well demarcated footpath एक फंडामेंटल राइट है एंड शैल ओवरराइड द प्रिविलेज ऑफ मोटर व्हीकल. रूलिंग जो है it put highlight a spotlight on India's vast road network, the second largest in the world, which handle 64% of the freight and 90% passenger traffic, according to Ministry of Road Transport and Highway. इस सिनारियो में हम लोग लेट्स एक्सप्लोर द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन रोड नेटवर्क, इसके मॉडर्नाइजेशन और इसके चैलेंजेस को. The evolution of Indian road network can be broadly divided into three phases. पहला, focus of the planning reflect a gradual shift from the basic connectivity to enabling macroeconomic integration and recently building integrated logistic network. पहला फेज 1943 से 1998. पहला फेज ब्लूप्रिंट फेज था जब when the road planning was led by Indian Road Congress. Indian Road Congress अपेक्स बॉडी है हाईवे इंजीनियर का, इस्टेब्लिश किया गया था 1934 में टू डेवलप नेशन वाइड स्टैंडर्ड्स फॉर रोड्स. इस फेज में गोल था कि बेसलाइन रोड डेंसिटी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर अचीव करेंगे एंड क्लासीफाई किया रोड को नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज रोड में. सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड बेसिक कनेक्टिविटी एंड मीट न्यूमेरिकल टारगेट. सो द रिजल्टिंग रोड नेटवर्क वाज ऑफन फ्रैगमेंटेड एंड हैड लिमिटेड कैपेसिटी अक्रॉस लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सेकेंड फेज हुआ focus on the connectivity and was largely driven by the economic growth that followed the liberalization. In the second phase was 1998 to 2017 and shifted the basic access to right volume transit. National Highway Development Project NHDP was set up in 1998 to upgrade and modernize India's national highway through the successful development of the Golden Quadrilateral and North-South and East-West corridor. The NHDP, National Highway Development Project, established India's primary high-speed, high-capacity highway network. However, NHDP largely focused on the linear model for widening existing highway rather than developing new highway lines. So the economic activity जो है concentrate हो गया along the expanded lines. Many highways passing through the expanding urban settlement developed severe traffic bottleneck and raising logistics cost and slowing transit. The third phase 2017 से present. The third phase is marked by the focus on integrated grid, recognizing the limitation of linear expansion. The remaining phase of NHDP were merged into Bharatmala Pariyojana, which aims to connect 550 district headquarters through 4-lane corridor-based highway.
This was integrated with the PM Gati Shakti National Master Plan, a unified digital platform launched in 2021 to synchronize multi-ministerial infrastructure planning. This initiative represents a shift from point-to-point highway widening to creating a spatial logistic grid. Instead of merely expanding the old route, the focus today is bypassing congested urban route entirely through the access control greenfield corridor, thereby optimizing economic geography of the nation and making movement goods faster and cheaper. Greenfield and Brownfield Expressway. Notably, the modernization of India's road infrastructure follow the two approaches. First is greenfield construction and second is brownfield upgradation. The greenfield construction, the construction of project on new alignment is categorized as a greenfield project. Greenfield expressway are new highway construction on previously undeveloped land. Since they are planned from scratch, they can bypass the heavily congested urban center and high traffic routes. This enables designing route with a straight alignment, minimal curve and banking, super elevation capable of supporting a speed of up to 120 kmph. In addition to improving travel time, greenfield corridor can support regional economic by creating new access point for logistic park, manufacturing cluster and a smart sub-cities long sub-corridor. While greenfield expressway जो है उसका एडवांटेज है, लेकिन इसमें बहुत ही सारे चैलेंज हैं, लाइक लार्ज स्केल लैंड एक्विजिशन, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल एनवायरनमेंट एंड लीगल क्लियरेंस, जिसके कारण डिलेज होता है, डिस्प्यूट होता है, ओवर कंपनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन। दूसरा ब्राउनफील्ड अपग्रेडेशन, जिसमें मॉडर्नाइजेशन होता है, वाइडनिंग होती है, रीअलाइनमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे होता है, मेनली थ्रू द अपग्रेडिंग heavily trafficked 4-lane highways into 6 or 8-lane corridor. This project utilized the existing right-of-way ROW footprint, the total width of the land acquired by government for construction, operation and future expansion of the highway. Brownfield expansion provide करता है immediate relief for the country's aging economic road network by focusing on the routes where commercial traffic chokes local productivity. The primary challenge emanate करता है need to carry out construction while traffic continue to flow. Existing urban development, older bridge layout, etc. Further constrain एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। ये सजेस्ट करता है ब्राउनफील्ड इनिशिएटिव कैन पार्शियली एड्रेस मेनी लॉन्ग स्टैंडिंग bottlenecks. Recognizing these structural limitations, focus has increasingly been shifted from merely expanding existing highway to designing integrated network and new economic corridor. So, from highways to economic corridor, India's road building strategy जो है भारतमाला परियोजना में maps road construction directly in relation to the trade volume. 26,000 किलोमीटर ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान किया गया to connect resource rich hinterland with consumption center. So this integration जो है supported by PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है,
ये क्या है? यूनिफाइड GIS बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को इंटीग्रेट करता है। ये ओवरले करता है 200 डेटा लेयर्स इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्री लाइन, इंडस्ट्रियल जोन, यूटिलिटी पाइपलाइन platform. 6. To eliminate potential conflict before construction begin through coordination of the involved ministry. और ये जो है प्रोजेक्ट डिजाइन से लेके डेटा ड्रिवन मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन सिस्टम। मॉडर्न हाईवे जो है डिज़ाइन किया जा रहा है विद द फीडर टू अदर ट्रांसपोर्ट मोड intersecting directly with the DFC dedicated freight corridor, inland waterways and major international airport तो लॉजिस्टिकल टर्नअराउंड टाइम को रिड्यूस करने के लिए। चैलेंज क्या है इम्प्लीमेंटेशन में? डिस्पाइट ए क्लियर स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट, इंडिया का जो हाईवे मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव है एग्जीक्यूशन चैलेंज है इसमें, एज वेल एज प्रोजेक्ट टाइमलाइन एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी में भी चैलेंज है। पहला तो है लैंड एक्विजिशन में डिले होना। जो द प्रोक्योरमेंट ऑफ लैंड है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फ्रैगमेंटेड लैंड ओनरशिप है, डिस्प्यूटेड लैंड टाइटल है, प्रोट्रैक्टेड लिटिगेशन है। इफेक्टिवली प्रोजेक्ट कॉस्ट और डिले एग्जीक्यूशन को बढ़ा देता है। दूसरा चैलेंज है इन्वायरमेंटल एंड अदर क्लियरेंस। हाईवे प्रोजेक्ट जो है रिक्वायर प्री क्लियरेंस रिलेटेड टू फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, इकोसिस्टम सेंसिटिव जोन, जिसके कारण डिलेज और प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्केलेशन होता है। फिनांस एक अदर चैलेंज है। तो फॉलोइंग द स्लो डाउन इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे हाई रिस्क स्टेट को डायरेक्ट फंडिंग करनी पड़ती है। तो टू रिवाइव द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हाइब्रिड एन्युटी मॉडल वाज इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें गवर्नमेंट जो है बियर करती है 40% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वाइल रिमेनिंग 60% इन्वेस्टमेंट इज़ मेड बाय प्राइवेट डेवलपर। हालांकि HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हेल्प्ड किया है रिवाइव हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन में, बट इट शिफ्टेड द लार्ज फाइनेंशियल बर्डन एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट टू द पब्लिक बैलेंस शीट में। सो टुवर्ड्स बिल्डिंग फास्टर एंड सस्टेनेबल रोड, ये इंडिया का लार्ज स्केल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पुश करता है फ्रॉम रोड एज ए ओनली ट्रांसपोर्ट लेन्स टू द डायनामिक इकोनॉमिक कॉरिडोर थ्रू द rural agrarian pocket, tier 2 tier 3 town manufacturing cluster, maritime ports into unified domestic market. However, success of the strategy depends on the policies, क्योंकि अकाउंट में लेता है ह्यूमन कॉस्ट को ऑफ हाई स्पीड ट्रांजिट और इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्रेजाइल टेरेन्स। Moving forward, the state needs to institutionalize a strict eco-engineering solution and wildlife corridor systemic safety protocol while fast-tracking project that is environmentally sustainable. After all, हाईवे मॉडर्नाइजेशन जो है वो किलोमीटर से डिसाइड नहीं होगा, लेकिन बल्कि सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कॉरिडोर should coexist with the ecosystem. Thank you.